एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टार्क एंड ट्विस्ट फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन स्पेसिमेन। ठीक है, आज हमने रिलेशन मालूम करना है बिटवीन टार्क एंड ट्विस्ट। किसी बॉडी पे या किसी शॉर्ट पे अगर हम टार्क अप्लाई कर ले तो उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं। जब एक स्पेसिमेन पे हम टेंसाइल फोर्स, एक रॉड हो उस पे हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एलांगेट होता है। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ डिक्रीज होती है और डाया इंक्रीज होता है। जब हम टार्क अप्लाई करते हैं तो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टार्शन। ठीक है, उसमें टार्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आज हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं टार्क और उस ट्विस्ट के दरमियान। अगर एक स्पेसिमेन में हम टार्क अप्लाई कर ले तो उसमें ट्विस्ट कितना प्रोड्यूस होता है, क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल चेक करते हैं कि किसमें कौन सा मटेरियल बेस्ट है। ठीक है, तो आज हमारा ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वीडियो में बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ थ्योरी डिस्कस करता हूँ और इसका वीडियो में बनाऊंगा, फिर वो आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टार्क एंड ट्विस्ट फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन हम लेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला और टार्क और ट्विस्ट के दरमियान रिलेशन अप्लाई कर, टार्क के साथ ट्विस्ट इंक्रीज होता है तो वो रिलेशन हम मालूम करने हैं, डायरेक्ट रिलेशन है या और क्या रिलेशन है। ठीक है, तो प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टार्क एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल चेक करेंगे तो जिसका ग्राफ स्ट्रेट हो, ज्यादा स्ट्रेट होगा तो वो बेस्ट होगा। तो इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ स्पेसिमेन एंड ट्विस्ट। अगर लेंथ ज्यादा हो तो ट्विस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, लेंथ कम हो मतलब अगर हम ऐसा स्पेसिमेन यूज करें जिसका लेंथ कम हो तो उसमें ट्विस्ट कम प्रोड्यूस होगा। अगर ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका लेंथ ज्यादा हो तो ट्विस्ट उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टू प्रिडिक्ट विच मटेरियल इज सूटेबल फॉर टॉर्शनल लोडिंग। ठीक है, 3 किस्म की मटेरियल हम चेक करेंगे, उसमें हम कंक्लूजन बताएंगे कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है फॉर टॉर्शनल लोडिंग। ये उसका फिगर है। ठीक है, जो आपके लैब में है। ये साइड, ये वाला साइड जहाँ मैंने माउस रखा ये फिक्स्ड है और ये वाला साइड जहाँ पे ये पुली आपको नजर आता है ये मूवेबल है। ठीक है, लोड हम यहाँ डालते हैं, इधर दो आर्क आपको नजर आते हैं, एक आर्क ये है और दूसरा आर्क ये है। ये आर्क हमारे लिए θ1 मेजर करता है और ये वाला आर्क हमारे लिए θ2 मेजर करता है। ठीक है, तो इस आर्क की मदद से यहाँ हम लोड अप्लाई करते हैं। पहले हम 0 न्यूटन लोड पे सपोज करते हैं कि इस दोनों में ट्विस्ट 0 है। ठीक है, फिर हम 5 न्यूटन लोड डालते हैं और फिर यहाँ θ1 यहाँ से और यहाँ से θ2 मेजर करते हैं। ठीक है, फिर हम 10 न्यूटन लोड डालते हैं और फिर यहाँ से θ1 θ2 नोट करते हैं, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, तो 4 या 5 रीडिंग हम लेते हैं और दरमियान में यहाँ हम स्पेसिमेन रखते हैं, इस जगह से फिक्स करते हैं और इस जगह पे यहाँ हमारे साथ 3 जार्स चक लगा होता है, जिस तरह लेथ मशीन में है 3 जार्स चक। तो स्पेसिमेन का ये हिस्सा सर्कुलर है और ये हिस्सा ट्रायंगुलर है। तो ये सर्कुलर हिस्सा हम यहाँ फिक्स करते हैं और जो ट्रायंगुलर सेक्शन है वो हम यहाँ फिक्स करते हैं। ठीक है, और जो आर्क हमने लगाए हैं ये आर्क इस फिक्स्ड पॉइंट से हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट लेंथ हम यहाँ से मेजर करते हैं। तो ये हम अमूमन 200 मिलीमीटर पे लगाते हैं और ये हम 400 मिलीमीटर पे लगाते हैं। इसकी पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप 200 की जगह इसको 100 पे लगाए, इसको 200 पे लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अमूमन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस आर्क को हम इस फिक्स पॉइंट से 200 मिलीमीटर लेंथ पे फिक्स करते हैं और इसको हम 400 मिलीमीटर पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्पेसिमेन है, इसमें पुली है, ये यहाँ 3 जार्स चक है। ठीक है, ये हमारे साथ आर्क है, ये हमारे साथ दूसरा आर्क है और इधर हम स्पेसिमेन लगाते हैं। जो रॉड आपको नजर आता है ये हमारे साथ स्पेसिमेन है। ठीक है, तो ये सिंपल apparatus है। It is an apparatus used to understand and investigate directly the relationship between the torsional load applied to a round bar and the angular twist producer and how this relationship varies with the beam material and its cross-sectional polar moment of area। ठीक है, इसका जो polar moment of area है
और पोलर मोमेंट ऑफ एरिया क्या है? जिस तरह हम इनर्शिया इनर्शिया डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। मतलब जो जो रेजिस्टेंस आपके मोशन को जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इस तरह हम जब टॉर्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो जो रेजिस्टेंस उसको प्रोड्यूस होता है उसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस तरह आम कंडीशन में हम कहते हैं कि एक बॉडी की मोशन को जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जिस तरह एक बॉडी में टॉर्शनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो टॉर्शनल इफेक्ट को जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। ये अभी आ जाएगा, ठीक है। स्पेसिमेन आर रिजिडली हेल्ड इन ए क्लैम फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ द बेंच टॉप बेस फ्रेम ऑफ द apparatus। एक साइड पे फिक्स है, मैंने आपको बताया कि एक साइड हमारे साथ फिक्स है। ए बियरिंग एट द अदर एंड कंटेन्स ए शॉर्ट शाफ्ट विद एन इंटीग्रल पुली एंड ए थ्री जार चक। एक साइड फिक्स है, उधर हमने फिक्स किया है, और दूसरी साइड पे पुली है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, और एक थ्री जार चक है। The pulley has cord wrapped around his periphery to allow torque to be applied using the load hanger and calibrated weights supplied, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि पुली के थ्रू हम लोड अप्लाई करते हैं और लोड हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, पहले 0 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर पहले 0, फिर 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, इस तरह हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ए रोटेशनल स्केल and pointer can be attached to any point on the specimen length to find the angle of twist of this specimen, ठीक है। दो आर्क है, मैंने आपको बता दिया, एक से हम θ1 मालूम करते हैं और दूसरे से हम θ2 मालूम करते हैं। तो इस पे पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर हमें शो करता है जब हम लोड डालते हैं, जिस तरह हमने पहले स्प्रिंग वाले एक्सपेरिमेंट में किया था। जब हम लोड डालते थे तो पॉइंटर का पोजीशन चेंज होता, पहले हम पॉइंटर को 0 पे सेट करते थे, फिर हम लोड डालते थे तो उसका पोजीशन चेंज होता था। तो इसमें भी यही है, अगर हम लोड डालते हैं तो स्पेसिमेन में ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, तो जब ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज हमें पॉइंटर बताएगा, पॉइंटर का पोजीशन चेंज होगा तो उसी से हम एंगल मालूम करेंगे। स्पेसिमेन सेट इज अप्लाइड विद ए वैरायटी ऑफ स्पेसिमेन अराउंड बार एंड डिफरेंट मटेरियल, मतलब 3 किस्म की मटेरियल हम यूज करते हैं, तीनों का डाया सेम होगा, तीनों का डाया सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, तीनों का डाया सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, मुख्तलिफ मटेरियल हम यूज करेंगे विद सेम डाया। तो अगर एक का डाया हम वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम कर लें तो बाकी दो का वही होगा, क्योंकि मटेरियल का डाया सेम है। टैब में हमारे साथ जो 3 मटेरियल है उनका डाया सेम है। It must be noted that one end of a specimen is semicircular, which is to be fit in the fixed end of the apparatus, while other end of the specimen has a triangular cross section, which is to be fit in the three jar chuck for experimental purposes, ठीक है। एक साइड सेमी सर्कुलर होता है और दूसरा ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर को हम फिक्स एंड में रखते हैं और ट्रायंगुलर को हम थ्री जार चक में रखते हैं, ठीक है। अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। तो टार्क क्या है आपको पता है, रोटेशनल इफेक्ट है, किसी बॉडी पे आप लोड अप्लाई कर ले और उस लोड की वजह से उसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उस फिनोमेनन को हम टार्क कहते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे साथ टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर हमारे साथ मोमेंट आर्म है और एफ हमारे साथ फोर्स अप्लाइड है, ठीक है। टार्शन क्या है? टार्शन इज द ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड टार्क। किसी ऑब्जेक्ट पे आप टार्क अप्लाई कर ले, उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाए तो इस इफेक्ट को हम टार्शन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टार्शन जी यहाँ पर कुछ कॉर्नर भी हैं, वो कह रहे हैं आप इंग्लिश में समझा रहे, उनको समझ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली टार्क इज द रोटेशनल इफेक्ट, our experiment is to find the relationship between torque and twist. If it is directly relation or inverse relation, or related to square of twist or cube of twist or under root of twist. Okay, twist is defined as the angle of deflection when object is submitted to torsional loading. When we applied torsional loading on a specimen on a rod, twist is produced in that body. This effect is called torsional effect.
Formula to find the theoretical value of twist, the following formula is used. Formula for torsional effect is theta is equal to TL divided by GJ, where T is torque produced. I explain what is torque. Rotational effect produced in a body is called torque. L is length of specimen, the specimen which we used in our experiment. We used three types of specimen in our experiment. G is model of rigidity of specimen, or shear modulus, or modulus of rigidity, which I explained in the previous experiments. The ratio between shear stress and shear strain is called modulus of rigidity. J is equal to polar moment of inertia. There are two types of inertia. One is inertia and one is polar moment of inertia. Inertia is resistance to motion of a body, and polar moment of inertia is when we produce twist in a body, the resistance of producing twist in a body is called polar moment of area or polar moment of inertia. The polar moment of inertia is defined with respect to an axis perpendicular to the area considered. It is analogous to the area moment of inertia, which characterizes beam ability of resist bending. And area moment of inertia, area moment of inertia is a resistance to bending, and polar moment of area is resistance to twist. One is inertia, other is polar moment of inertia. Third is polar moment of area. Inertia is resistance to motion of a body. Okay, resistance to motion in a body. Second is polar moment of inertia. Polar moment of inertia is a resistance to bending of a specimen or of an object. Third is polar moment of area. Polar moment of area is actually resistance to produce twist in a body. Clear? You understand inertia, polar moment of area, and polar moment of inertia. Polar moment of inertia is equal to pi d4 divided by 32, where d is a diameter of a specimen. We use three types of material in our experiment. Modulus of rigidity, I explained. The ratio between shearing stress and shearing strain is called modulus of rigidity or shear modulus. Mathematically, G is equal to tau divided by gamma, where G is equal to modulus of rigidity, tau is equal to shear stress, gamma is equal to shear strain. Experimental procedure. Firstly, measure the physical dimension of steel bar, e.g. length of specimen and diameter of cross section. First of all, we will measure the length of specimen and diameter of a cross section. Okay, we will measure the diameter of cross section with the help of a vernier caliper. Attach first specimen to the 3-jar chuck and fixed end of the apparatus. First of all, fix the both ends of the apparatus and attach 3-jar chuck with this specimen. This is actually setup of the experiment. Adjust one arc at 200 mm from the fixed end, while other end at 400 mm from the fixed end.
I explain you to fix one arc at 200 millimeter and second arc at 400 millimeter from the fixed in. The distance, this distance will be from the fixed in. Adjust the needle at 0 to the arc type scale when the load is 0 Newton. There are two scales, one is on arc 1 and other is on arc 2. First of all, adjust both the needle on 0 scale. Apply load to the hanger and measure theta 1 and theta 2. Fill in the data in table 1 and repeat the above procedure for aluminum and brass. We use three types of material. One is steel, second is aluminum, and third is brass. First you obtain the data for steel, then for aluminum, and then for brass. We observe the diameter of steel, aluminum, and brass are all equal. I explained you that three types of material are same diameter. Fully diameter D is equal to 75 millimeter. I measured it in my video. From table 1, we observed that theta 1 is nearly twice as that of theta 2. It means that there is direct relation between torque and twist. As theta 1 is nearly twice that of theta 2. It means that there is direct relationship between torque and twist. This is the data from the previous batch, serial number 12345. Load applied for steel bar 0 Newton, 5 Newton, 10 Newton, 15 Newton, 20 Newton. Or radius of bar 32.5 millimeter, 32.5 millimeter, same dia. Okay. Torque applied for 0 Newton load. For 0 Newton load, applied torque is 0 Newton per millimeter. For 5 Newton load, torque is 162.5 Newton per millimeter. Theta 1 is for 400 millimeter 1 and for 200 millimeter 0.5. Similarly, theta 1 for 400 millimeter and load 10 Newton. Theta 1 2 and theta 2 1. Similarly, for 15 Newton load, torque is 32.5 Newton per millimeter. Torque is 15 Newton per millimeter. Radius same है and torque is 487.5, and for 20 Newton load, torque is 650 Newton per millimeter. This column is torque. Okay. Theta 1 is 3, theta 2 is 1.5. For load 20, theta 1 is 4 and theta 2 is 2. Similarly, for aluminum and for brass. This data is from previous batch. At last, you draw the graphs between torque and twist. This graph is for steel. It means that steel is the best material for torsional effect. Results and conclusion. The following results and or conclusion can be deduced from this experiment. Theta 1 is nearly twice as that theta 2, when L1 is nearly twice of L2. Thus, there is a direct relation between angle of twist and length of the specimen under consideration. L1 we will take L1 double of L2. L1 is 400 millimeter and L2 is 200 millimeter. We obtain theta 1 nearly twice as that of theta 2 from the data from the table. It means that there is directly relationship between angle of twist and length of the specimen. As torque increases, theta increases as well. With the increase of torque, twist increases. What is theta? Theta is twist.
Thus, there is also a direct relation between torque and angle of twist. When we increasing the torque, the twist increases. It means that there is a direct relationship between torque and angle of twist. Consider the linear trend, the line graph for all material. Slope of steel is greater than slope of brass, and slope of brass is greater than slope of aluminium. It means that steel is the best material for torsional effect. Thus, we say that the steel is the most suitable material for torsional loading because it provides the greatest resistance to angle of twist. मतलब इसका its polar moment of area will be greater. This is the experiment. Please ask if any question. Excuse me, sir. जी Sir, why we measure two angles instead of one? जी Sir, हम दो angles को we measure two angles. We measure two angles instead of one because we find the relationship between length and twist. If we double the length, the angle double. It means that there is directly relationship. If we increase the length, the twist will be doubled. If we measure only one length, we cannot find this relationship. If we use one arc instead of two arcs, we cannot find this relationship. From we can also use three arcs instead of two. We can also use four arcs instead of three. If we use one arc, we cannot find the relationship Yes, sir, between got it. Thank you. length and angle of twist. Clear? Clear? If we use one arc, we cannot measure Yes, sir. Thank you, the sir. relationship between length and angle of twist. Ask if any question. No, sir. Clear? Yes, sir. For further student, if any question. Clear? No, sir. Yes, sir, clear. Okay, I noted the attendance. You can leave the class after attendance. ओके सर स्लाइड्स फिर अपलोड कर दें सर ये स्लाइड्स फिर अपलोड कर दें जी यार ये तो मैं अपलोड नहीं करता हूँ उसने ये तो हम रिपोर्ट तो मैं आपको नहीं दे सकता जी जी सर वीडियो लेक्चर का कह रहे इस्माइल हैं साहब ने वो और प्लान स्लाइड बनाए हैं तो आप उनकी स्टूडेंट से वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा ठीक है